Namaste, खुश रहो बिटिया. I am GV Dr. Sunita Bhati, Department of Science and Technology, Faculty of Education and Methodology, Jyoti Vidyapeeth, Women's University. I am teaching you .NET framework. This paper belongs to DET 6th semester. So let's start our today's session. Uh, in our today's session, I'm going to discuss you how to create control statements or decision-making statements in our VB.NET programming. Okay, so first of all, what are control structures or decision-making statements? So if you are doing programming and there is some conditions, you have to perform some codes according to the specified condition, then you can use decision making statements or control structures. In VB.NET, the control statements are used to control the execution of the program on the basis of the specified condition. It is useful for determining whether a condition is true or not. In Visual Basic.NET, there are so many control structures. This is all decision making statements like if then statement, if then else statement, if then else if statement, select case statement, and nested select case statement. So we will start from for our first decision making statements, that is if then statement. Okay, so let's take the let's take its introduction part. If then statement. What is the if then statement? This statement is used to when we need to execute a single or block of statements on a particular condition becomes true. Means if a particular condition is happening and becoming true, then this if block will be executed. Means if you want to execute some codes according to specified condition, okay, then you can use this if then statement. Okay, what is the syntax for if then statement? You can see here, if is a keyword and you have to specify here condition uh, in front of if, and after specifying condition we have to use then is a keyword. Okay, and then after that in the next line you can start your code of if block. You can write here a single statement or you can write multiple statements, okay, as according to your program. Now after all these statements you write, then after that, and we have to end the if block. So what we write, end is a keyword, and single space and if that is also a keyword, and if से हमको इसको क्लोज करना है. ओके, हमको if से स्टार्ट करना है if स्टेटमेंट, और कंडीशन स्पेसिफाई करनी है, देन लिखना है. if और then दोनों ही क्या है, कीवर्ड्स है, और एंड और if भी कीवर्ड है. ओके, इन दोनों के बीच में if कंडीशन देन एंड if, इन दोनों के बीच में आपको पूरा if ब्लॉक स्पेसिफाई करना है कि पर्टिकुलर if के साथ जो भी कंडीशन आपने दी है अगर वो ट्रू है तो क्या एग्जीक्यूट होना चाहिए या क्या होना चाहिए, तो वो कोड हम इसके बीच में लिखेंगे. इफ कंडीशन, यदि कंडीशन डिफाइन जो भी आपने करी है वो ट्रू है तो जो भी ब्लॉक में लिखा है आपने वो एग्जीक्यूट हो जाएगा. अगर ट्रू नहीं है, फॉल्स है, तो एग्जीक्यूट नहीं होंगे. ये स्टेटमेंट जो आपने इफ के अंदर, इफ की बॉडी में स्पेसिफाई किए हैं, कंडीशन एग्जीक्यूट नहीं होंगे जब कंडीशन फॉल्स होगी. फिर क्या होगा, कंट्रोल जो है वो नेक्स्ट एंड इफ के बाद के स्टेटमेंट पर चला जाएगा और वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएंगे. सो लेट्स टेक एन एग्जांपल. आई एम showing you in Visual Basic.NET. I'm showing you in Visual Basic.NET that how we can use if statement. Okay, so let's you can see here I'm starting Visual Basic.NET Visual Studio. How can we start? We will double click on our Visual Studio icon
After double clicking, this screen will show, and we have I have selected this community version launch. And after creating a new project, finally we will come to the screen like this. Okay, this is the ID of Visual Studio, and then here we can design our form and do programming, or you can write your code here. Okay, so there are two parts. First of all, designing part, and the next is coding part. So in this form, when you will start a new project, this form will be blank. Okay, now I already designed this form for you to show, because so it will not take so much time for designing. So I have already designed this form. I'll show you how to code this. Actually, this form, how we can design this form, you already know, because I have discussed in our earlier classes how to design a form. So this is the label, and this label value, enter number 1, is that text property we have set it here. In this next label, we have set it enter number 2 text property. In the third label, we have set it result. Text value is result, which is showing here. Now these are the text fields. These are the text fields or text boxes we have taken. This text box, we have set it its name. We have changed its name. Here you can see in design column, name txtno1, and in this is for second text box, we have given a name for the second text box, txtno2, and for third text box, we have given the name, that is you can see here txt res result ke liye. Okay, and this is the button, that is command button, and its label is max value. We have set it by this text property. Okay, txt is, you can write here whatever you want to show on the label, sorry, on the button. Okay, so max value is showing because we have set it here text property as max value. Now we can change its name, command button name, by using name property. We are going at design column, and now the name property is btn max. We have already written this btn max name for this command button. Okay, these all are the components of this form. Okay, you can take these all components from this toolbox. I already discussed in our earlier classes, so I am not elaborating it's in detail. These are the components you can drag and drop here, and set these set the properties of these components by this property window. You can select the component and change its property from this window. Okay, so this is the designing part. Now we come to the coding part. Our aim is to calculate the max value. We have entered here number 1 and number 2 here, and then after that we will click on max value button. Then it will show that which number is greater, which number not. If number 1 is greater, it show here number 1 is greater, whatever the value, like 44 and 35. So 44 is greater, so it will show here 44. Max value is 44. Okay, actually only we have used only if then statement. We are not using if else statement. So only for first condition, that is number 1 is greater, then it will show here. If number 2 is greater, it will not show anything in this result box. Okay, only it will show if number 1 is greater, then it will show here number 1 is greater. Between these two numbers, it will check. Okay, so how we will code this?
So let's come to the coding part. Actually what we are doing in this program, we are clicking on that button and result shows in this third text box. So we have to code the button handler. We have to make the button handler. How you can make this button handler, or means you have to create a procedure or method on clicking that button. Okay, so first for invoking its handler, you have to double click on that button. मीन्स यहाँ पे आपको डबल क्लिक करना है ताकि इसका हैंडलर ओपन हो जाएगा और वहां पे अपने को कोड करना है. तो डबल क्लिक करते हैं हम इस पर, देखते हैं क्या होता है. ओके, you can see here this code window will open, and there is a public class that is form1, and already it is created, and this handler for button btn max जो हमारा बटन है जो हमने फॉर्म पर लिया था, उसके लिए ये हैंडलर ऑटोमेटिक इन्वोक हुआ है. इसके अंदर आपको कोड करना है. मीन्स वहां पे आप जब रन टाइम पर प्रोग्राम बटन पर क्लिक करोगे तो ये कोड एग्जीक्यूट होगा और मैक्स वैल्यू निकाल के बता देगा. तो हम कोड करते हैं. सबसे पहले फर्स्ट टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू को हमें, चूंकि टेक्स्ट बॉक्स में अपन वैल्यू एंटर करेंगे, वो वैल्यू किस टाइप की होगी, टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जो वैल्यू होगी वो टेक्स्ट और स्ट्रिंग टाइप की होती है. तो उसको हमको इंटीजर में कन्वर्ट करना होता है, क्योंकि हमें उसको चेक करवाना है कि दोनों नंबर में से ग्रेटर नंबर कौन सा है. सो हम सबसे पहले वो टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू को गेन करेंगे. कैसे करेंगे, और इंटीजर में डालेंगे, इंटीजर वेरिएबल में. तो मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में बताया कि इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर कैसे करते हैं. dim a as integer, a as integer equals to, actually I'm assigning text box value to a. so text box value जो टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जो वैल्यू है वो टेक्स्ट फॉर्मेट में है, तो उसको हम कन्वर्ट करेंगे इंटीजर. स्ट्रिंग फॉर्मेट में है वो, तो उसको कन्वर्ट कर रहे हैं पार्स, ARS पार्स इंटीजर डॉट पार्स can see parse integer dot parse text box. First text box का name we will write here txt no1 txt no1 dot text text. इसमें जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ है हम उसको एक्सेस कर रहे हैं यहाँ पे. Okay, so what we will doing here we are getting text number 1 dot text, means जो भी text box number 1 के अंदर जो वैल्यू है उसको एक्सेस करके, और integer dot parse, इंटीजर क्लास इसका मेथड है पार्स. पार्स मेथड इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जो भी स्ट्रिंग वैल्यू है, जो भी नंबर आपने एंटर किया है जो कि स्ट्रिंग टेक्स्ट फॉर्मेट में, उसको इंटीजर में कन्वर्ट करके a वेरिएबल में स्टोर करते हैं. वी आर असाइनिंग दिस वैल्यू टू a. नाउ dim b as integer equals to integer dot parse. Now we are accessing the value of text and number 2. सेकेंड टेक्स्ट बॉक्स की जो वैल्यू है हम उसको एक्सेस कर रहे हैं. text ये एक्सेस कर ली हमने सेकेंड टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू, एंड वी आर असाइनिंग this text box value to b variable. Now we have two numbers a and b, and after that we will check which number is greater. If a is greater than b, then देखिए इफ ब्लॉक स्टार्ट हो चुका है, इफ का और एंडिंग हो रही है एंड इफ से. उसके अंदर हम क्या करेंगे, जो ग्रेटर होगा वो टेक्स्ट बॉक्स, थर्ड टेक्स्ट बॉक्स जो है हमारा txt res, उसके अंदर आ जाएगी वैल्यू डॉट txt इक्वल्स टू
अब एक्चुअली जो वैल्यू है ए वो इंटीजर टाइप की है और हम इसको ना स्ट्रिंग टाइप में कन्वर्ट करके और इसमें डालेंगे CSTR इसके अंदर कन्वर्ट करके हम ये ए की वैल्यू को इसमें डाल देंगे. ओके, सो व्हाट इज द you can see what we have done here. हमने क्या किया, a जो हमारा वेरिएबल है इंटीजर टाइप का उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके हमने थर्ड टेक्स्ट बॉक्स रिजल्ट टेक्स्ट बॉक्स में डाल दिया है. नाउ वी विल रन आवर प्रोग्राम बाय क्लिकिंग रन बटन. ओके, दिस इज build button. You can run your program by clicking on this button. Okay, so our processing will start. Now you can see that what will be the output. The processing is going on, so it's take a few seconds to come on the screen. We will wait. Okay, processing is going on. Okay, this form is come on the screen, present on the screen. Now we will enter number 1, that is 45, and we'll enter number 2, that is 20. Which number is greater? Max value is 45. Okay, so if we will write the first number 5 and second number 20, means second number is greater, then it will show nothing. Actually we have not cleared here so ओके वापस इसको रन करते हैं, क्योंकि अभी हमने इसको क्लियर करने का कोड नहीं लिखा है तो यहाँ क्लियर नहीं होगा, तो वो कुछ बताएगा नहीं अभी. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हमको यहाँ से इसको वापस क्लोज करते हैं और अगेन वापस रन करके देखते हैं इस कंडीशन को. वापस से रन करके हम देखते हैं क्या होता है. अगर हम फर्स्ट टेक्स्ट बॉक्स के अंदर, ये देखिए फर्स्ट टेक्स्ट बॉक्स में हमने ग्रेटर वैल्यू डाली थी तो यहाँ पे शो कर दिया था कि मैक्स वैल्यू इज दिस. अब फर्स्ट बॉक्स में हम लोअर वैल्यू डालते हैं और इसमें ग्रेटर डालते हैं, तो it will show nothing to result text box because we have not written the code for that. Okay, we have only written for a is greater than b. Now if you can again type this, so C control V, I am copy paste and changing the condition. If b is greater than a then b आ जाएगा, b की वैल्यू आ जाएगी. ओके, लाइक दिस. अब यू कैन सी दैट हमने दोनों कंडीशन यहाँ स्पेसिफाई की. a is greater than b, then a is greater, रिजल्ट टेक्स्ट बॉक्स में आ जाएगा. if b is greater than a then b आ जाएगा. ओके, पहले हमने इस चीज को हैंडल नहीं किया था, इस कंडीशन को हैंडल नहीं किया था, ये हम दोनों कंडीशन को हैंडल कर चुके हैं. अब देखते हैं हमारा आउटपुट किस तरह से होता है. you can see we are entering 50 and sorry, we have entered 50 and 45, which is greater, 50 is greater. Now we will enter another value, that is 24, and you can see in here 40. You can see 40 is greater. We have handled both the conditions. If a is greater, then means number 1 is greater, then number 1 is greater. If number 2 is greater, then number 2. मैक्स वैल्यू दोनों में से जो भी होगी वो प्रिंट हो जाएगी. तो इस तरीके से हम इफ कंडीशन का अपने प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं. दिस इज इफ देन स्टेटमेंट. Okay, this is our today this is all about our today's session, and if you have any problem you can contact on my WhatsApp number. This session is powered by digital version 2.0 Jyoti Vidyapeeth Women's University. Thank you.